Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 20, 21 and 22nd of October. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. In this video we are talking about Brazilian Vice President Geraldo was on a visit to India from 15th to 17th of October. Then we will be talking about Government of India that has launched a 600 crore rupees Kapas Kranti mission that will be promoting high yielding cotton cultivation. Then we will be talking about Government of India that has notified the Notaries Amendment Rules for 2025. Then we will be talking about Niti Aayog and DP World. They have launched V-Rise initiative that will be empowering the women entrepreneurs. All these things and many more will be discussed in this video. So stay tuned with us till the end. If you are new here students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs and the content provided here is top-notch. And students, I hope you all celebrated Diwali in a very enjoyable way. Now you should come back and start your preparation and focus on your learning. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs. First is Brazilian Vice President was on a visit to India recently, right? And he is the Brazilian Vice President and Minister of Development, Industry, Trade and Services, that is Geraldo Alckmin, right? And he was on a visit to India from when to when? From 15th to 17th of October. All right. And what this will do is this will promote the strategic partnership between India and Brazil. You will be seeing cooperation here in various sectors. You will be seeing multiple MOUs. You will be seeing various trade deals will be signed here. And this trade will be flourishing between India and Brazil. Take a note of this. This is important, right? On his visit, he met with Rajnath Singh, our defense minister, and together they have proposed for the supplying of Akash, that is a surface to surface missile system to Brazil. So we will be developing and exporting these Akash surface to surface missiles, to whom it will be transferred to Brazil, right? And it will be a co-production and co-development for this Akash missile. Take a note of this. This is important, first thing, right? Second, remember here trade ministerial review meeting was co-chaired by him and Piyush Goyal. Correct. And this is to strengthen the economic partnership between these two countries, and also a preferential trade agreement was signed between them, right? This will increase the bilateral trade from $12 billion that was in 2024. It will be increased to $20 billion. And the target here is 2030. Right, students? So take a note of this. This is important. Also, between India and Brazil, we'll be seeing a SCA. What is this SCA? SCA is a strategic cooperation agreement that will be promoting the C-390 Millennium aircraft production between these two, right? And it will enhance the Indian Air Force security power, right? And it will be beneficial for both the countries in terms of trade. So you need to remember that. Moving on, Government of India, they have launched a 600 crore rupees Kapas Kranti mission. This is basically for cotton cultivation, right? This is to promote and boost the cotton cultivation in areas such as your Akola, Maharashtra and Telangana, right? It will be utilizing various scientific equipments, new technologies, right? And also a high density planting method. This technology will be utilized here, right? This high density planting is basically when you plant multiple crops in a very close by to each other, right? So this Kapas Kranti mission, this is a 600 crore rupees mission that has been launched to promote high yield long staple crop, that is your cotton cultivation. What is the amount here? That has been 600 crore rupees that has been allocated, right? Apart from this, an application, that is Kapas Kranti application, has been launched. This we have discussed this multiple times also. Apart from this app will basically enable the farmers to locate their nearest procurement center and book them, and they can sell at those centers these cotton crops. This will be eliminating the middleman and also will ensure the transparency in the prices. Also, over the last 10 years, the MSP, minimum support price, for cotton has almost doubled. That in 2024 it stands at 8,110 rupees per quintal. Right, students? Take a note of it.
Here you can see all that we just discussed. Next is Government of India. They have notified the Notaries Amendment Rules 2025. Here they have increased the notary limit in 4 states. Which are these states and what is the limit that has been increased? Is let me show you. In Gujarat, the earlier limit was 2,900 rupees. That has been increased to 6,000 rupees. For Tamil Nadu, it has increased to 3,500 rupees. For Rajasthan, increased to 3,000 rupees, and for Nagaland, increased to 400 rupees. Right? This notary, this is a public officially appointed by the Government of India to perform legal certificate duties. This will verify, authenticate, and certify the legal documents. Also, witness signatures are on the official papers, and it administers the oath and affirmations. So in these areas, we have seen in these states the notary limit has been revised, and this is the limit. This can be definitely asked that what is the new notary revised limit for Tamil Nadu state, for example. So it is 3,500 rupees, increased from 2,500 to 3,500. Next is Niti Aayog and DP World. They together have launched a V-Rise initiative that will empower the women entrepreneurs. See, in economic development of India, it is not just men who should contribute in the economic development. Women should also contribute, right? And if women are equally contributing, then we can see that India's growth will be tremendous, right? So keeping in this mind, Niti Aayog and World Entrepreneurship Platform, right? This is Niti Aayog or your Women Entrepreneurship Platform. That is Niti Aayog's initiative only. They have collaborated with UAE based DP World, and they have launched an initiative V-Rise. This is promoting women entrepreneurship. They are promoting sustainable entrepreneurship, right? Take a note of this. And apart from this, here you can see that this V-Rise initiative, question will be asked that between which two organizations. It is Niti Aayog's World Economic Women Entrepreneurship Platform and DP World of UAE. They have partnered here. This will be empowering the women entrepreneurs, and women-led MSMEs with high growth potential across India will be targeted. Also, selected entrepreneurs from them will be showcased. Their products will be showcased at Bharat Mart in Dubai, right? Because you can see that DP World, that is of Dubai, they have partnered here. Moving on, next is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. They have recently revised the guidelines for PDMC scheme to foster the micro irrigation. I repeat, the Department of Agriculture and Farmers Welfare under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, they have revised the limits for PDMC. What is this? This is your per drop more crop. Per drop more crop scheme, right? The aim here is to promote efficient water use and raise of income of the farmers. Here, the revised guidelines, they will enable more flexibility for the states and union territories to take up the micro level water storage and conservation projects. Correct? Take a note of this. Here, earlier, funding 20% of the states and union territories and 40% for the north states and Himalayan states earlier. Right? The revised guidelines will enable more flexibility for the states and unities to take up these micro level water storage and conservation projects that will ensure water security. Right? And it will further promote the farming practices, and it will help the farmers for whenever they are required. Correct? So we can see this PDMC scheme. What is the main aim of this scheme? It is to promote micro irrigation technologies. It will ensure precision farming. It will ensure more productivity. If more productivity, hence more income to the farmers, and also will promote water security. Next students, next is India AI and World Health Organization. They have launched global call for abstracts on AI in health. I repeat, India AI mission that comes under MEITY, that is Ministry of Electronics and Information Technology. They have collaborated with World Health Organization and has announced a global call for abstracts on impactful applications of artificial intelligence in health system. Right? This will create a casebook of AI health use cases for the global south. AI health cases. Right, that means we will be utilizing artificial intelligence, right? There are models that are various large language models that has been trained, right, to perform a particular task, right, in the particular healthcare sector. So what this will do is, we know that this will enhance the research and development, right? More research can be done, better disease prevention or better disease, you will be able to predict them. You will be able to identify the disease easily with the help of AI based on the report and the data, right? So what this will do is, this will identify, document the real world AI health solutions that can be replicated, and will help to scale them in various developing countries. Here, various participants have been shortlisted, various papers has been outlined, various AI solutions are coming into play, various entrepreneurs that are utilizing this AI technology and coming up with better use cases in the healthcare sector, they will be promoted here. Correct? Take a note of this.
Next students, next is codex. They standard codex standards. They have finalized the vanilla, coriander, large cardamom at the CCSCH8 in Guwahati, Assam. Right, that is the 8th session of the Codex Committee on Species and Culinary Herbs, that is CCSCH8. Right, where was this held? It was held in Guwahati, Assam, and this 8 signifies the 8th edition. Right, and here they have finalized the Codex standards for vanilla, coriander, large cardamom, bringing the total number of global spice standards developed by CCSCH to 19. Here this particular organization or this session, it was organized by the Spice Board of India under the Ministry of Commerce and Industry, held from 13th to 17th of October. Right, students, take a note of this. And what is the total number of spice standards? The global spice standard now in India, it is 19. Next, one more thing, this CCSCH, it was hosted by Food and Agriculture Organization, World Health Organization, right? And this includes almost 30 member countries here. Next students, banking and finance. Agas Federal Life, they have partnered with CSB Bank for new SME bancassurance. What is a bancassurance? Bancassurance is when a bank and an insurance company, they partners together. When these two comes together, that is a bancassurance, right? So Agas Federal Life, they have partnered with the CSB Bank for this SME bancassurance. Correct? Take a note of this. This will establish the new SME bancassurance, and here CSB Bank, it will integrate the insurance offering to their financial service products such as loans, banking credit lines, etc. Moving on. Next is awards and recognition. Global FinTech Award 2025 has celebrated the trailblazers redefining the global FinTech landscape. Take a note of this, students. We are talking about the 4th edition of the Global FinTech Awards. They were announced during the Global FinTech Fest. This Global FinTech Fest was held at Geo World Convention Center, that is in Mumbai, Maharashtra, and it is to honor the outstanding work of various individuals in the FinTech ecosystem. This was organized by whom? This Global FinTech Fest, it or this global, where these awards were announced, these Global FinTech Awards, they were jointly organized by the Payment Council of India and FinTech Convergence Council. Correct? Take a note of this, students, can be asked. One thing that you need to remember here that is important is, that is Upasana Taku. Upasana Taku. Right, she is the Upasana Taku, the co-founder and CFO of Mobivic, was honored with the FinTech Person of the Year award in the female category. Right, so Upasana Taku, she was honored with this FinTech Person of the Year female award. If we talk about the male, so Yashish Dayya. Correct. The chairman of PB FinTech has won the FinTech Person of the Year male. So who won the FinTech Person of the Year female? Upasana Taku. Who won the FinTech Person of the Year male? Yashish Dayya. Next is appointments and resignation. Shantha Rangaswamy has been elected as the first women president of ICA, that is your Indian Cricketers Association, and she became the first woman to lead this organization. Direct question can be asked. Take a note of this. Correct. Then next, Deepak Jain has been appointed here as the treasurer. Deepak Jain. Vikant Sundaram appointed as the secretary here. Right, students? Next is acquisitions and mergers. Emirates New Development Bank acquired 60% stake in RBL Bank in recorded FDI deal. I repeat, Emirates NDB Bank, the second largest bank in UAE, have acquired a 60% stake in RBL Bank through a preferential issue of the shares worth 26,850 crore rupees, that is approximately $3 billion. This deal marks the largest FDI in India's financial sector and will make Emirates NDB the controlling shareholder of RBL Bank, subject to regulatory approvals from the RBI. Moving on. Next is Science and Technology. CSL, that is your Cochin Shipyard Limited, they have launched the 6th anti-submarine warfare shallow watercraft INS Magdala. Where was this launched? It was launched in Kochi, Kerala. Very important, take a note of this. That is the INS Magdala, launched by whom? Cochin Shipyard Limited, and it is in the 6th in the series of the 8 anti-submarine warfare shallow watercraft. It has been designed for the Indian Navy, launched where? Location is important, Kochi, Kerala, and it has 80% indigenous content, hence we can say it is make in India, right? Any product will be considered as made in India when it has more than 50% indigenous content. This is 78 meters long, 896 ton of the weight here, right? And it has a 25 knots of maximum speed. Moving on to
environment, 6 new ordinate species has been discovered in the Silent Valley National Park of Kerala. Here you can see, right, ordinate species. We also call them in local language helicopters, right? So these are the damsfly, dragonflies or ordinates, right? They have been discovered in the Silent Valley National Park of Kerala, and these are the 6 new species that has been discovered, and hence their scientific name here. Moving on to obituary students, Nobel laureate and physics pioneer Shen Ning Yen has recently passed away. As you can see him in the picture here, right? He recently passed away at the age of 103 in Beijing, China, born in 1922. He won the Nobel Prize in Physics in 1957, and this was for discovering parity violation in weak nuclear interactions, and he became the first Chinese born Nobel laureate here. Correct. Next students, important days. World Menopause Day observed on 18th of October, and this day is observed to raise awareness about the menopause and support the options for the women's health. There is a theme here, students, theme being lifestyle medicine in menopause health. This is the theme that you need to all remember, and first time this was observed on 18th of October 2009. Then next is World Osteoporosis Day observed on 20th of October, and this day is observed to raise global awareness of the prevention, diagnosis and treatment of the osteoporosis and metabolic bone disease, and the theme here is it's unacceptable, right? First observed on 20th of October 1996. Then next is your National Solidarity Day observed on 20th of October. This year it was the 63rd anniversary of the war, right? That is your 1962 Indo-China War that started on 20th of October in 1962 and ended on 21st of November in 1962, right? And this is the 63rd anniversary of the war, correct? Take a note of this. Moving on, students, to important days to revision part, right? This will be quite beneficial for you all, so stay tuned with us till the end. BRO, that is your Border Road Organization, has built the world's highest motorable road at Megla Pass at an altitude of 19,400 feet in Ladakh under the project Himang in October 2025, right? So take a note of this height built by BRO, and this has also been a Guinness World Record. Next, the 71st Wildlife Week observed from 2nd to 8th of October across India. Which of the following projects was not launched during the Wildlife Week 2025 celebration presided over by the Union Minister Bhupendra Yadav in Dehradun, Uttarakhand? So among the following, if we see, Project Snow Leopard was not launched here, right? So this is our answer. Project Dolphin was launched, the phase 2 of it. Project Sloth Bear, Project Ghadial was launched. Then Tigers Outside, that is Project Tiger Outside Tiger Reserve, was launched. Correct. Next is, which city has been declared as India's safest city for the 4th time consecutively as per the Crime in India 2023 report released by National Crime Records Bureau under the Ministry of Home Affairs. So it is Kolkata, West Bengal, that has been declared as the safest city for the 4th time. If we talk about the unsafe city in India, which is it? It is Kochi. Kochi is in Kerala. Next is state duration of implementation for the 1500 crore rupees critical mineral recycling incentive scheme, whose detailed guidelines were issued by the Ministry of Mines. So state the duration here. It is for FY 26 to FY 31. Next, which ministry launched the People's Plan Campaign 25-26, that is Sabki Yojana Sabka Vikas Abhiyan, in October to prepare Panchayat development plans for FY 27. So which ministry has launched this People's Plan Campaign? It is Ministry of Panchayati Raj. The campaign here aims to promote participatory, transparent and accountable local governance by engaging communities through Gram Sabha meetings. Next is choose the institution where Union Minister Ashwini Vaishnav has recently approved the establishment of the Namo Semiconductor Laboratory in October to boost indigenous semiconductor facilities. So choose the institution. It is IIT Bhubaneswar of Odisha. Next, where was the 42nd session of the International Civil Aviation Organization Assembly held from September to October? It is Montreal, Canada. Right? Take a note of this. And this was this ICO Council. During the 42nd ICO Assembly, 36-member council elected for a 3-year term. Next, pick out the correct statement regarding the RBI directions issued in September. If we look at the options here, option A is right and C is right, B is wrong. B is saying that these directions shall come into force from 1st of January 2026. No,
They will be coming into force from 1st of October 2025 onwards. Next is in September, Axis Bank in partnership with Dash launched India's first gold-backed credit line on UPI, aiming to simplify working capital access, business growth financing, and urgent liquidity needs. So Axis Bank in partnership with Free Charge, right? They have launched India's first gold-backed credit line on UPI. Moving on, RBI, they have announced a new scheme unveiled from which date to which date? It was from 1st of October till 30th of September for facilitating the accelerated payout to ensure faster settlement of inoperative accounts and unclaimed deposits that are lying within the bank account, so that people can get their money back, or the people who are their relatives should get their money back. Correct? Next, in September, SEBI, they have extended the deadline for the complete rollout of Dash to April 1st. So SEBI, they have extended the deadline for the complete rollout of retail algorithm trading to 1st of April 2026. Now, as AI is in the picture, now the retail investors will also be allowed to use algorithms for trading into the retail market or for trading on the equities. Correct? And the platform is jointly managed by two quality registrar and transfer agents. They are CAMS, the famous one, that is Computer Age Management Service Limited, and the second one is KFIN Technologies. Right? Next is in September, RBI has imposed a penalty of 31.8 lakh rupees on which bank for non-compliance with the direction on priority sector lending targets and classification. So RBI has imposed a penalty of this 31.8 lakh rupees on Indian Overseas Bank. Next, how much loan amount was approved for the development of Indore Metro Rail project in Madhya Pradesh by Asian Development Bank? So what was the amount here? It was $190 million. Next, identify the organization that was granted self-regulatory organization status by RBI in October for the asset and loan financing of NBFC. So identify that organization. It is FIDC, that is your Finance Industry Development Council. Next is select the organization that collaborated with SEBI to develop the validated UPI handles and SEBI check initiatives launched in October 25 to strengthen the investor payment security. It is NPCI, National Payment Corporation of India, right? And they have launched a handle also at the rate of valid. Next, identify the bank that in partnership with Ubuntu Systems Private Limited launched India's first youth-focused digital banking application, that is Cosmos Galgal app, in October 2025. So identify the bank that in partnership with Ubuntu Systems Private Limited have launched this. It is Cosmos Co Private Bank Limited. Right? Next, name the product launched jointly by the PhonePe and Utkarsh Small Finance Bank in October through the PhonePe application, which offers a fixed deposit backed credit card facility starting from 2000 rupees. It is Wish Credit Card, right? This is the product jointly launched by PhonePe and Utkarsh Small Finance Bank. Next is, what is India's GDP in both FY26 and FY27 as forecasted by Asian Development Bank in their report? ADB growth slows as a new global trade environment takes shape September 2025. This was released in September 2025. So what is India's GDP here? It is 6.5 that is being projected. Next, find out the individual who is not among the top 5 richest Indians as per the M3M Huron India Rich List released in September. If we see here, Shah Rukh Khan is not among the top 5 richest Indians here. Remember, this is the 14th edition of the M3M Huron India Rich List, and it is Mukesh Ambani, the chairman of Reliance Industries Limited, that has secured the top position with 9.55 lakh crore of total net worth, and Gautam Adani and family secured the second position here. Next, identify the person who were announced as the winners of the Nobel Prize in Physiology or Medicine in October. If we look at the options here, Simon Sagaguchi, Mary E. Birknow, and Fred Ramsdell. These are the 3 individuals, these scientists were awarded with the Nobel Prize in Physiology or Medicine. Correct? Next is, choose the ministry that implements the National Service Scheme under which My Bharat NSS Award 22-23 were presented by the President of India, Draupadi Murmu ma'am, in October. So, choose the ministry that implements this National Service Scheme. It is Ministry of Youth Affairs and Sports. And a total of 50 recipients here were awarded. Next,
Who among the following jointly received the 2025 Nobel Prize in Physics for their discovery of microscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in electric circuit? So if we'll see here, all these three options are rightly mentioned. The laureates here demonstrated that the quantum mechanics governs the macroscopic systems with Josephson junctions underpinning the quantum computers, flash memory and ultra precise quantum sensors. Next, identify the new Managing Director and CEO of Union Bank of India and Central Bank of India respectively appointed by ACC. If we look at here, so Ashish Pandey has been appointed as the MD and CEO of Union Bank of India and Kalyan Kumar as the MD and CEO of Central Bank of India. Next, who was appointed as the brand ambassador of Viksit Bharat Buildathon, a nationwide innovation initiative which aimed to engage the students from class 6 to 12th by the Ministry of Education. So, Subhanshu Shukla, right? He was recently appointed as the brand ambassador, and Subhanshu Shukla became the first Indian to reach the International Space Station. Correct? Through which mission? It is Axiom 4 mission, right? It was a mission of NASA where astronauts went to International Space Station, and it was Falcon 9 rocket that took them to space. Next, pick out the incorrect statement regarding the 15th edition of the World Para Archery Championship held in South Korea. If we look at the options here, all these three options are rightly mentioned. Next, mention the name of the countries going to co-host the inaugural Women's T20 World Cup Cricket for the Blind in November. So if we look at the options here, so it is India and Sri Lanka, right? Not third option, option fifth is right. India and Sri Lanka are going to co-host the inaugural Women's T20 World Cup for cricket for the blind people. Correct? Take a note of this, and this will be for the blind women. Next, mark the correct statement regarding the 12th edition of the World Para Athletics Championship hosted by India in Jawaharlal Nehru Stadium, right, from 27th of September to 5th of October. So if we look at the option, all these three options are rightly mentioned, and Brazil has topped the medal tally with a total of 44 medals, whereas India finished in 10th position with 22 medals. Next is who won the 24th edition of F1 Singaporean Grand Prix on 5th of October at the Marina Bay Street Circuit in Singapore. So George Russell has secured the top position and he has won this F1 Singapore Grand Prix. George Russell drives for Mercedes and he is from which country? He is from UK. Then on second position was of Max Verstappen and Lando Norris was on the third position. Next is Padma Vibhushan awardee Pandit Channulal Mishra, who passed away in October, was conferred with Padma Bhushan in 2010 and Padma Vibhushan in 2020 for his contribution in the field of art. Correct? Take a note of this, students. Next, the United Nations International Day of Older Persons, observed annually on 1st of October to honor the rights and well-being of older people, was first observed in which year? It was first observed in 1991. Take a note of this. Next, the National Wildlife Week is observed every year in India from 2nd to 8th of October to promote awareness about the protection of wildlife and biodiversity. What was the theme of the 71st National Wildlife Week celebrated in 2025? So, it is Seva Parv, right? So, it is Seva Parv. Next, World Space Week, it is annual United Nations observance held globally to celebrate achievements in space sciences and technology. During which dates was the World Space Week celebrated under the theme Living in Space? It was from 4th to 10th of October we observe World Space Week, right? And living in space is the theme here. Living in space is the theme here. Next, identify the regulatory organization with which the PFRDA has signed a memorandum of understanding during the celebration of NPS Divas on 1st of October to enhance pension outreach in agriculture and rural sector. So identify that regulatory organization. It is NABARD, right? So NABARD and PFRDA, they signed this MOU during the NPS Divas that was on 1st of October. So this question can be asked that NPS Divas is observed when? It is on 1st of October. Next, students, is our homework section. First question is about Purple Fest. Why this Purple Fest is observed, which edition it was observed, and the location where was it observed. Second question, who has topped the Forbes India Rich List? Right, give me top 3 and their net worth also. Third question, recently collateral fee, or not this one, let me ask you some other, right? Apart from this, tell me recently EY India,
they have partnered with which organization to launch free AI skills, right? This will bridge the AI talent gap. Then fourth question, first of its kind QR code based challan system, right? Payment of the challan system has been organized. A proper QR code based traffic challan payment kiosk has been established. Where it has been established? Fifth question, tell me recently who became the footballer's first billionaire player, right? Football's first billionaire. Tell me the name of that famous footballer. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली स्टूडेंट्स। आपने दिवाली आई होप अच्छे से सेलिब्रेट करी हो, राइट? एंड सेफ दिवाली रही हो आप सभी के लिए। अब दिवाली सेलिब्रेट हो चुकी है, फेस्टिवल खत्म हो चुका है। नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क, पढ़ाई शुरू करते हैं। एंड आज की वीडियो में हम 20, 21 और 22 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील ये इंडिया के विजिट पे थे। देन 600 करोड़ रुपए का एक कपास क्रांति मिशन को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉटन कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। एंड हम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटरीज रूल्स को यहाँ पे अमेंड किया है, उसको डिस्कस करेंगे। 4 स्टेट्स में ये अमेंडमेंट हुआ है। इसके अलावा नीति आयोग एंड डीपी वर्ल्ड इन्होंने वी राइज इनिशिएटिव को लॉन्च किया टू एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड मेनी मोर, तो एंड तक बने रहिएगा। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट जो कि हैं जेराल्डो एल्केम। ये अभी इंडिया के विजिट पे थे। ये 3 दिन के विजिट पे थे, 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक, राइट? इनसे रिलेटेड इन्होंने कोई भी अगर विजिट पे होता है ना, तो हम देखते हैं कई सारे एमओयू साइन होते हैं, ट्रेड डील साइन होती हैं, जिसके लिए दोनों कंट्रीज को काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वाइस प्रेसिडेंट ये मिले राजनाथ सिंह से जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। एंड यहाँ पे एक डील साइन हुई आकाश सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है इसके प्रोडक्शन के लिए, एंड ये डिलीवर की जाएगी ब्राजील को। तो इससे इंडिया को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। फिर इसी के अलावा ये पीयूष गोयल जी से मिले। पीयूष गोयल जी के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे जो ट्रेड रिलेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में वो बढ़ाने की बात की, जो कि अभी $12 बिलियन का था 2024 में। इसको बढ़ा के $20 बिलियन तक ले जाने की बात की गई 2030 तक, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसी के अलावा एक C-390 एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन का ये एक अग्रीमेंट साइन है, दोनों कंट्रीज मिलकर इसको बनाएंगी। एंड ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए भी, ठीक है? तो ये कुछ चीजें यहाँ पे इनके विजिट से रिलेटेड याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं 600 करोड़ रुपए का एक कपास क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, जो कि हाई यील्डिंग मतलब आउटपुट ज्यादा होगी, लॉन्ग स्टेपल क्रॉप जो रहेगी कॉटन कल्टीवेशन, मतलब कॉटन कल्टीवेशन के लिए कपास क्रांति मिशन लॉन्च किया गया। 600 करोड़ रुपए का रहेगा। इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है जहां पे फार्मर्स इजीली यहां पर अपनी क्रॉप्स को, कॉटन को सेल कर सकेंगे, जिसमें मिडल मैन को यहां पे एलिमिनेट करने का काम किया जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी अच्छी होगी एंड जो फार्मर है उनको बेटर प्राइस मिलता हुआ दिखेगा, राइट? उनकी क्रॉप का उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर हम देखें तो पिछले सालों में डबल होता हुआ दिखा। अभी जो एमएसपी है कॉटन का वो कितना है, 8,110 रुपए पर क्विंटल का 2024 में जो देखने को मिला, ठीक है? तो मिडलमैन को एलिमिनेट करने के लिए एप्लीकेशन है। इससे कॉटन फार्मर्स को काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। कॉटन फार्मर्स को काफी बेनिफिशियल यहाँ पे ये रहने वाला है ये इनिशिएटिव, राइट? मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नोटरीज अमेंडमेंट रूल्स लाए हैं। कुछ नोटरी लिमिट इंक्रीज की गई है स्टेट में। नोटराइज्ड क्या होता है, जब आप किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, राइट? वहां पे उस पर विटनेस के सिग्नेचर्स होते हैं ऑफिशियल पेपर पे, जो हर जगह यूज आते हैं। ओथ्स, अफर्मेशन, उनको एडमिनिस्टर किया जाता है इस नोटरी से, राइट? तो यहाँ पे जो नोटरी का ना कुछ स्टैम्प पेपर का आपका कुछ अमाउंट होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुजरात में पहले 2900 था, जो बढ़ के 6000 हो गया। तमिलनाडु में 2500 था, वो बढ़कर 3500 हो गया। राजस्थान में
2000 से बढ़ के 3000 हो गया एंड नागालैंड में 200 से बढ़ के 400 रुपये होता हुआ देखा। इसके बाद आ जाते हैं नीति आयोग एंड डीपी वर्ल्ड, इनके द्वारा वी राइज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया टू एम्पावर द वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, राइट। वीमेन एंटर, देखो किसी भी देश को अगर ग्रो करना है ना तो सिर्फ मेन के कंट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा, वीमेन का कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। एंड इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो इंडिया में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो दिखेगा, राइट। जीडीपी इंक्रीज होती हुई दिखेगी, पर कैपिटा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए ये वी राइज इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च करा गया। इवन यहाँ पे 100 सेलेक्टेड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड ये डीपी वर्ल्ड जो कि यूएई में है, यहाँ पर इनके डीमार्ट में इन प्रोडक्ट्स को शोकेस भी करने का काम किया जाएगा, भारत मार्ट जो कि दुबई यूएई में है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने रिवाइज की गाइडलाइंस फॉर पीडीएमसी स्कीम टू फॉस्टर माइक्रो इरिगेशन। पीडीएमसी क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ड्रॉप मतलब पानी को सस्टेनेबली यूटिलाइज करना है, यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन पे फोकस रहना है, ड्रिप इरिगेशन पे फार्मर्स को ध्यान दिया जाएगा, राइट। वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को लाया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जो वाटर सिक्योरिटी है वो प्रमोट की जा सके, पानी का तरीके से यूज किया जा सके, राइट। इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ती हुई दिखेगी एंड जो लोकल वाटर मैनेजमेंट है वो भी बहुत बेटर होता हुआ दिखेगा, करेक्ट। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने रिवाइज की गाइडलाइंस फॉर पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम की विद एन एम टू प्रमोट एफिशिएंट वाटर यूज एंड रेज द इनकम ऑफ फार्मर्स, मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है इंडिया एआई एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने लॉन्च किया ग्लोबल कॉल फॉर एब्स्ट्रैक्ट्स ऑन एआई हेल्थ। देखो एआई अब हर जगह यूज हो रहा है, राइट। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी हम इसको यूज कर सकें, इससे ऊपर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन कर सकें एआई से हेल्थ केयर सेक्टर में, जिससे बेटर यूज केसेस सामने आ सकेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकेगी। हमारे पास डाटा तो है इतने सारे पेशेंट्स का, तो उससे हम ट्रेन कर सकेंगे, जिससे जो डिजीज है उनको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उसको हम कम कर सकेंगे, रोक सकेंगे, नए ड्रग्स को हम मैन्युफैक्चर कर सकेंगे, नई टेक्निक्स हम मैन्युफैक्चर कर सकेंगे, बॉडी के बारे में हम ज़्यादा और रिसर्च कर सकेंगे एंड उससे रिलेटेड उसकी फंक्शनिंग को और अच्छे से समझ सकेंगे। तो ऐसी यूज केसेस को सामने लाने के लिए इंडिया एआई एंड डब्ल्यूएचओ के द्वारा यहाँ पे पार्टनर किया गया ताकि हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का बढ़ावा दिया जा सके। इससे नए एंटरप्रेन्योर्स, नए स्टार्टअप्स हमें इस सेक्टर में आते हुए दिखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स फाइनलाइज्ड फॉर वनीला, कोरिएंडर, लार्ज कार्डेमम एट CCS CH8 इन गुवाहाटी असम। ये क्या है, ये है 8वां एडिशन ऑफ द कॉडेक्स कमिटी ऑन स्पीशीज एंड कलनरी हर्ब्स, गुवाहाटी असम में हुआ। तो कौन सा एडिशन 8वां हुआ, कहां पर, गुवाहाटी असम में। एंड यहाँ पे वनीला, कोरिएंडर एंड लार्ज कार्डेमम, इनका कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स को फाइनलाइज किया गया। इनके एडिशन से अब टोटल 19 स्टैंडर्ड स्पीशीज के हम यहाँ पे स्पाइसेस के देख सकते हैं। इस सेशन को ये जो हुआ था किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। 13 से 17 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। एगास फेडरल लाइफ इन्होंने पार्टनर किया सीएसबी बैंक के साथ फॉर न्यू एसएमई बैंकरेंस। बैंकरेंस क्या होता है, जब एक बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनर करता है उसको बैंकरेंस कहते हैं, राइट। तो ये एसएमई बैंकरेंस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बैंकरेंस सेटअप किया गया ताकि इंश्योरेंस को और डीप पेनिट्रेशन हमें देखने को मिल सके, जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन तक ये इंश्योरेंस सेगमेंट आ सके, इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड कराई जा सके। एंड सीएसबी बैंक यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा इन इंश्योरेंस ऑफरिंग को अपने फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे लोन्स के साथ, बिजनेस क्रेडिट लाइंस के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे स्टूडेंट्स। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स की बात करेंगे 2025 की। इन अवार्ड्स को, ये 4th एडिशन रहेंगे ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स के। इनको अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो कहां पर होगी, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हमें देखने को मिलेगी, जो कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में, राइट। एंड फिनटेक इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए, राइट, फिनटेक इकोसिस्टम में जिन्होंने एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उनको सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड्स दिए गए। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के द्वारा ये अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाएगा। यहां पे याद रखेंगे 2 इंडिविजुअल्स, एक तो है उपासना ताकू एंड दूसरे आ जाते हैं यशिश दहिया। इन दोनों को यहां पे सम्मानित किया गया है फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर। फीमेल आ जाए फिनटेक पर्सन ऑफ द फीमेल कैटेगरी में उपासना ताकू,
फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में यशिश दहिया, इन दोनों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे स्टूडेंट्स। शांता रंगस्वामी, इनको इलेक्ट किया गया, ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की, ये इंपॉर्टेंट है, पहली प्रेसिडेंट। इसी के अलावा विकांत सुंदरम, इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया आईसीए का। दीपक जैन को ट्रेजरर अपॉइंट किया गया। एंड इसी के अलावा सुधा शाह को बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल में अपॉइंट किया गया। शुभांगी कुलकर्णी को आईपीएल गवर्निंग बॉडी में इलेक्ट किया गया। मूविंग ऑन, फिर एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर आते हैं स्टूडेंट्स। एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने एक्वायर किया 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक इन रिकॉर्ड एफडीआई डील, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डील। 26,850 करोड़ रुपए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन आते हैं, वो इसमें एक्वायर करे गए हैं। एंड ये डील मार्क करती है लार्जेस्ट एफडीआई इन इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर, एंड इट विल मेक एमिरेट एनडीबी द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर ऑफ आरबीआई सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवर्स ऑफ आरबीआई। मतलब इनके पास अब ये स्टेक, अब ये रेगुलेट कर सकेंगे इस बैंक को। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे स्टूडेंट्स। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इन्होंने छठा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मगदाला को यहां पे लॉन्च किया। कहां पर? कोची, केरला में। ऐसे 8 डिलीवर होंगे, 8 में से छठा नंबर का ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट रहेगा। इससे इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखेगी। एंड ये आईएनएस मगदाला किसके द्वारा बनाया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। 80% इंडिजीनियस कॉन्टेंट है, मतलब मेक इन इंडिया के कैटेगरी में ही आता है। अगर मेक इन इंडिया की कैटेगरी का क्राइटेरिया क्या है? 50% इंडिजीनियस कंटेंट होना चाहिए, यहां पे 80% इंडिजीनियस कंटेंट है। ये 78 मीटर लॉन्ग रहेगा, 896 टन इसका वेट रहेगा, एंड 25 नॉट तक की इसकी स्पीड रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इन्वायरमेंट के ऊपर। 6 नई ऑर्डिनेट स्पीशीज को डिस्कवर किया। ऑर्डिनेट क्या, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, डैम्स फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, या फिर हेलीकॉप्टर के नाम से भी इनको हम जानते हैं, राइट। तो 6 नई स्पीशीज डिस्कवर की गई साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, जो कि केरला में है। ये वो 6 नई स्पीशीज आप देख सकते हैं एंड इनके रिस्पेक्टिव साइंटिफिक नेम। मूविंग ऑन, ऑब्यूटरी पर आते हैं स्टूडेंट्स। नोबेल लॉरेट एंड फिजिक्स पायनियर शेन निंग यांग, इनका रिसेंटली निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। 103 की एज में बीजिंग चाइना में इनका निधन हुआ था। 1922 में इनका जन्म हुआ था। 1957 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन फिजिक्स, एंड ये पहले चाइनीज इंडिविजुअल बने थे जिनको सम्मानित किया गया। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड मेनोपॉज डे 18 अक्टूबर को स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं, ताकि मेनोपॉज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। एंड इसकी एक थीम रहेगी लाइफस्टाइल मेडिसिन इन मेनोपॉजल हेल्थ, राइट। एंड 18 अक्टूबर 2009 को इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड ऑस्ट्रोप्रोसिस डे। 20 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इट इज टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्ट्रोप्रोसिस एंड मेटाबॉलिक बॉन डिजीज। इसकी एक थीम याद रखेंगे, इट्स अनएक्सेप्टेबल। ये एक तरीके की आपकी हड्डियों की डिजीज होती है, राइट। इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 20 अक्टूबर 1996 में इसको ऑब्जर्व करा गया। इसके बाद आ जाते हैं फिर नेशनल सॉलिडेरिटी डे। 20 अक्टूबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। 63rd एनिवर्सरी हमने इस बार ऑब्जर्व की थी इंडो चाइना वॉर की, जो कि 1962 में स्टार्ट हुई थी, राइट। तो इस बार हमने इसकी 63rd एनिवर्सरी ऑब्जर्व की। इसी को ऑनर करने के लिए यहाँ पे सोल्जर्स को नेशनल सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स रिवीजन पार्ट पे। ये आपका बहुत ही क्रूशियल सेगमेंट रहता है, तो इसको जरूर देखा करो एंड तक। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द यूथ फोकस इनिशिएटिव लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन सही है, ए गलत है, सी गलत है। ए कह रहा है पीएम मोदी ने लॉन्च किया पीएम सेतु विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज। तो नहीं, ये 50,000 करोड़ की लागत से नहीं, बल्कि 60,000 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया था। वहीं पे सी ऑप्शन, अब ए ऑप्शन सही है। सी कह रहा है बिहार की रिवैम्ड मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भट्टा योजना, राइट। इन्होंने ऑफर किया 5 लाख ग्रेजुएट यूथ को मंथली अलाउंस ऑफ 2,000 फॉर 2 ईयर्स, राइट। तो क्या ये सही है? नहीं, 2,000 रुपये नहीं, 1,000 रुपये यहाँ पे ऑफर किया गया फॉर 2 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अंडर द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन दैट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर, हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज ईएफटीए प्लेज्ड टू अट्रैक्ट इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो $100 बिलियन यहाँ पे अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आने वाले 15 सालों में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एंड पोटैश ग्रेनुअल प्रोडक्शन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। तो ये कहाँ पे रहेगी? ये अहिल्यानगर में रहेगी, महाराष्ट्र में। आने अगर हम इस प्लांट की बात करें तो इसकी कितनी कैपेसिटी बताई जा रही है? तो 12 टन तो यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से,
या फिर कंप्रेस्ड बायोगैस, एंड 75 टन हम देखें तो पोटैश ग्रेनुअल्स यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है पर डे। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं व्हाट इज द टोटल बजट अप्रूव्ड बाय द हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय अमित शाह इन अक्टूबर फॉर मिटिगेशन रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स 9 स्टेट्स में। तो कितना टोटल बजट अप्रूव किया गया, यहाँ पे 4,645 करोड़ रुपए अप्रूव करा गया है। मूविंग ऑन, फिर आते हैं अभी किस कंट्री ने इंडिया के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट करी, कोंकण एक्सरसाइज, राइट। 5 से 12 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज हुई थी। तो यूके एंड इंडिया के बीच में ये कोंकण एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी। टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बिल्ड किया वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट मिगला पास एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,400 फीट, एंड ये गिनी वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड्स, राइट, उसमें भी यहाँ पे इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट 71st वाइल्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, इसको ऑब्जर्व किया गया 2 से 8 अक्टूबर तक अक्रॉस इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वाज नॉट लॉन्च ड्यूरिंग द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इसको ऐड नहीं किया गया था, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट फिर आते हैं किस सिटी को भी डिक्लेयर किया गया इंडिया की सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, राइट, सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th टाइम। और अगर हम बात करें अनसेफ सिटी कौन सी है, वो है कोची। कोची केरला इज द मोस्ट अनसेफ सिटी, राइट, और सबसे सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम रहेगी कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट स्टेट द ड्यूरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर 1500 करोड़ रुपीज क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम, जिसका डिटेल गाइडलाइंस वर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो ये कब से कब तक लॉन्च की गई है, ये आपकी स्कीम लाई गई है FY26 से लेके FY31 तक। नेक्स्ट किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया पीपल्स प्लान कैंपेन, सबकी योजना सबका विकास अभियान, टू प्रिपेयर पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर FY27। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किया गया पीपल्स प्लान कैंपेन। नेक्स्ट पे आते हैं चूज द इंस्टीट्यूशन, जहां पर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, राइट, इन्होंने अप्रूव किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी इन अक्टूबर टू बूस्ट इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज। तो वो है IIT भुवनेश्वर, राइट, IIT भुवनेश्वर, करेक्ट। नेक्स्ट वेयर वॉज द 42nd सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली हेल्ड इन सितंबर टू अक्टूबर। तो कहाँ पर हुई थी ये असेंबली, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द RBI डायरेक्शंस इशूड इन सितंबर। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन ए सही है एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। ये कह रहा है कि ये जो डायरेक्शंस है ये कब से लागू हो जाएंगी, 1 जनवरी 2026 से, नहीं, ये फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होती हुई दिखेंगी। फिर नेक्स्ट पे आते हैं एक्सिस बैंक, इन्होंने भी पार्टनर किया किसके साथ, इन्होंने फ्री चार्ज के साथ यहाँ पे पार्टनर किया, लॉन्च इंडिया का पहला गोल्ड बैक क्रेडिट लाइन ऑन UPI, जिसका एम रहेगा टू सिंप्लीफाई वर्किंग कैपिटल एक्सेस, बिजनेस ग्रोथ फाइनेंसिंग एंड अर्जेंट लिक्विडिटी नीड्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अभी सितंबर के महीने में RBI ने अनाउंस किया नई स्कीम, ये अवेलेबल रहेगी फ्रॉम कब से कब तक, ये नई स्कीम्स अवेलेबल रहेगी 1 अक्टूबर से लेके 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, राइट, जिसका एम रहेगा फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेलरेटेड पे आउट, एंश्योर फास्टर सेटलमेंट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स लाइंग विद द बैंक्स। नेक्स्ट अभी सेबी ने एक्सटेंड कर दी द डेडलाइन फॉर द कंप्लीट रोल आउट ऑफ क्या, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर रिटेल एल्गोरिथम ट्रेडिंग। AI की मदद से यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिटेलर्स को भी ये ऑप्शन यहाँ पे लाया गया है और इसकी डेडलाइन अब एक्सटेंड कर दी है कब तक, 1 अप्रैल 2026 तक यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। कौन इंप्लीमेंट करेगा, CAMS एंड KFIN के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट अभी सितंबर में RBI ने इम्पोज की पेनल्टी ऑफ 31.8 लाख रुपीज किस बैंक पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन। तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक पर यहाँ पर अभी पेनल्टी इम्पोज करी गई। फिर आ जाते हैं कितना लोन अमाउंट वाज अप्रूव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कितना प्रोजेक्ट अमाउंट अप्रूव किया गया था, तो $190 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए थे। फिर है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रांट किया SRO स्टेटस, किस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट किया गया ये SRO स्टेटस, SR होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, RBI के द्वारा। तो किसको किया गया है ये FIDC, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को।
नेक्स्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेबी के साथ टू डेवलप वैलिडेट यूपीआई हैंडल्स एंड सेबी चेक इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड इन अक्टूबर, जो स्ट्रेंथन करेगा इन्वेस्टर पेमेंट सिक्योरिटी को। एट द रेट ऑफ वैलिड, यहाँ पे ये हैंडल्स भी लॉन्च करे गए हैं। किसके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट बैंक जिन्होंने पार्टनर किया उमुंथू सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड लॉन्च किया इंडिया का पहला यूथ फोकस्ड डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन कॉस्मोस गैलगल ऐप को इन अक्टूबर। तो आइडेंटिफाई दैट बैंक, वो कौन सा बैंक रहेगा? वो है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, उस प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया जॉइंटली बाय फोनपे एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इन अक्टूबर थ्रू फोनपे ऐप, जो ऑफर करता है फिक्स डिपॉजिट बैक क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 रुपये। तो वो है विश क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी इन बोथ FY26 एंड FY27 एज फॉरकास्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन देयर रिपोर्ट टाइटल एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ग्रोथ स्लोज एज अ न्यू ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट टॉक शेप सितंबर, रिलीज्ड इन सितंबर। तो क्या जीडीपी ग्रोथ है? 6.5% यहाँ पे प्रोजेक्ट करी गई। Find out the individual who is not among the top 5 richest Indians as per the M3M Huron India Rich List released in September। तो कौन है यहाँ पे? शाहरुख खान जी इस लिस्ट पे नहीं थे, राइट। टॉप किसके द्वारा की गई? सबसे पहले तो याद रखेंगे 14th एडिशन है ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट का, M3M ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट का। M3M काफ़ी प्रोमिनेंट बिल्डर है, गुरुग्राम हरियाणा में है, ये ऑपरेट करते हैं एंड उन्होंने कोलैबोरेट किया है यहाँ पे ह्यूरन इंडिया के साथ एंड ये लिस्ट रिलीज की। मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 9.55 लाख करोड़ की लागत से ये फर्स्ट पोजीशन पे थे एंड सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन हु वर अनाउंस्ड एज द विनर्स ऑफ द नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो आइडेंटिफाई द पर्सन्स, कौन है वो इंडिविजुअल्स? वो है शिमोन सागागुची, मैरी ई बर्कनो, फ्रेड रेमस्टेल, राइट। ये तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन से। नेक्स्ट, चूज द मिनिस्ट्री दैट इंप्लीमेंट्स द नेशनल सर्विस स्कीम अंडर द माई भारत NSS अवार्ड्स 22-23 दैट वर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो चूज द मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग जॉइंटली रिसीव द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड, किन्होंने रिसीव किया यहाँ पर? तो तीनों के द्वारा यहाँ पे इसको रिसीव किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो वो है आशीष पांडे एंड MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो है कल्याण कुमार। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, किनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डथॉन, जो कि एक नेशन वाइड इनोवेशन इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा टू एंगेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो किनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर? वो है शुभांशु शुक्ला, राइट। ये एक्सियोम 4 मिशन की मदद से किम में गए थे, बेसिकली नासा का ये मिशन रहेगा एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले ये पहले इंडियन बन गए हैं। फिर आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 15th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि साउथ कोरिया में हमें देखने को मिली, राइट। तो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, करेक्ट, मतलब तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्रीज गोइंग टू को होस्ट द इनॉग्रल वीमेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड वीमेंस के लिए ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप। इंडिया और श्रीलंका के बीच में इनको को होस्ट किया जा रहा है, राइट। मतलब को होस्ट कौन कर रही है, कौन सी कंट्रीज? तो इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट, फिर आ जाता है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्टेड बाय इंडिया इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फ्रॉम 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन A, ऑप्शन B एंड ऑप्शन C तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे एंड ये 12वां एडिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने जीता 24वां एडिशन ऑफ F1 सिंगापोरियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि मेरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुआ है इन सिंगापुर। तो जॉर्ज रसल के द्वारा इसको जीता गया। जॉर्ज रसल की बात करें तो ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं एंड यूके से ये बिलोंग करते हैं। सेकंड पे मैक्स वर्स्टैपेन एंड लैंडो नॉरिस ऑन थर्ड पोजीशन। फिर आ जाते हैं, पद्मा विभूषण अवार्डी पंडित चन्नूलाल मिश्रा, इनका भी निधन हो गया, जिनको पद्मा भूषण से 2010 में एंड पद्मा विभूषण से 2020 में सम्मानित किया गया था। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड इनके लिए, इस आर्ट्स के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। इनको वॉइस ऑफ बनारस के नाम से भी जानते हैं। फिर आते हैं, UN इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को टू ऑनर द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ ओल्डर पीपल, जो कि पहली बार ऑब्जर्व किया गया था कब? 1991 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था।
फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर तक इसको ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने के लिए। आपसे यहाँ पे थीम पूछी जा रही है 71st एडिशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक की। थीम रहेगी सेवा पर्व। फिर अगला है वर्ल्ड स्पेस वीक। वर्ल्ड स्पेस वीक हम कब से कब तक ऑब्जर्व करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड स्पेस वीक को, ठीक है। एंड लिविंग इन स्पेस ये यहाँ पे थीम रहेगी, लिविंग इन स्पेस ये यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ पीएफआरडी ने भी एक एमओयू साइन किया ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ एनपीएस दिवस 1 अक्टूबर को, राइट। तो ये है कौन, नाबार्ड। नाबार्ड ने पीएफआरडीए के साथ ये एमओयू यहाँ पे साइन किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैबिटेट डे। हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे कब, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर हु वन द मेंस 100 मीटर टाइटल एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में हुई। तो मणिकांता होबलीदार इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया, 10.19 सेकेंड्स के साथ इन्होंने जीता है एंड ये इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट टाइम रहेगा। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है। आई करेक्ट माई सेल्फ, ये पार्क बे में लोकेटेड है इन तमिलनाडु, राइट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, पार्क बे में लोकेटेड है आपका डुगोंग, इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट, करेक्ट थीम बताओ ऑफ इंटरनेशनल कॉफी डे जो अभी सेलिब्रेट की गई थी 1 अक्टूबर को। तो चूज द करेक्ट थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉफी डे। क्या थीम रहेगी, एम्ब्रेसिंग कोलैबोरेशन मोर देन एवर यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडियाज ओनली मड वॉल्केनो इरप्टेड आफ्टर अ गैप ऑफ 20 ईयर्स। तो बारातांग आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार्स आइलैंड्स, यहाँ पर इसको अभी इरप्ट हुआ आफ्टर 20 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज अपॉइंटेड बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल इन अक्टूबर एज द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। तो वेनेसा फ्राजेर, राइट, इनको अपॉइंट किया गया बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल इन अक्टूबर। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिन्होंने अचीव की नेटवर्थ ऑफ $500 बिलियन एंड ये पहले इंडिविजुअल बन गए हैं। तो ये कौन है, इलॉन मस्क, फर्स्ट इंडिविजुअल टू रीच दिस स्टैगरिंग वेल्थ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर स्टूडेंट्स, किस इंडियन स्टेट में ट्रेडिशनल फेस्टिवल मेरा हाउ चोंगबो को सेलिब्रेट किया गया अभी। तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, मणिपुर में इसको सेलिब्रेट करा गया। नेक्स्ट है, किस मंथ में एंड ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया एंड एक्सटेंड किया द वैलिडिटी ऑफ रेमिसेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड डेवलप्ड स्कीम्स, राइट। तो रोड टैप स्कीम, राइट, रेमिटेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, रोड टैप स्कीम, राइट, किस मंथ एंड साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। Next students is our homework section. First question is about Purple Fest. Why this Purple Fest is observed? Which edition it was observed and the location where was it observed? Second question, who has topped the Forbes India rich list? Right, give me top 3 and their net worth also. Third question, recently collateral fee or not this one. Let me ask you some other, right? Apart from this, tell me recently EY India, they have partnered with which organization to launch free AI skills, right? This will bridge the AI talent gap. Then fourth question, first of its kind QR code based challan system, right? Payment of the challan system has been organized. A proper QR code based traffic challan payment kiosk has been established. Where it has been established? Fifth question, tell me recently who became the footballer's first billionaire player, right? Football's first billionaire. Tell me the name of that famous footballer. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.